guys, this is Mesayanti and you are welcome to my channel Wow Detector. जैसे आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर ethnic wear नहीं पहनती हूँ, but since it is going to be the Bengali New Year, which is Poila Boishakh, my New Year, I wanted to wear something different. Though it's a dress, it looks very ethnic because it has Indian prints. और उसके साथ मेरा जो मेकअप है, I thought it should be a little different. तो मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने न्यू ईयर में या कोई ट्रेडिशनल फंक्शन में जाना चाहते हैं wearing something ethnic, this is the kind of makeup you should try. So let's begin. Bengalis love to highlight their eyes. So to begin this look, I would use golden color to highlight my eyes. So taking a brush, I'm going to take the color and apply it on the eyelid. I'm going to mix it up a little with silver. प्रोडक्ट का बैलेंस आप बड़े वाले मिरर पे चेक कर सकते हैं. तो इफ़ यू थिंक कि दोनों आँखों में किसी में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया है तो यू कैन ऐड मोर ऑन दी अदर आईज. In fact, to blend it smoothly, आप अपना fingers भी use कर सकते हैं, especially on top. अभी जो excess बचता है, you can touch it up on the nose, chin, cupid's bow, and also use the same color on your cheekbones. Now, after highlighting, I would like to do a little bit of chiseling of the look. तो उसके लिए मैं bronzer और blush on यूज़ करूँगी. So I have my brush for blush on. मैं थोड़ा सा apricot shade लेना हमेशा पसंद करती हूँ because it's a very neutralish color और ये Indian skin पे सबको अच्छा सूट करता है. Bronzer में उंगलियों से लगा दूँगी. उंगलियों से इसलिए यूज़ करना पसंद करती हूँ बिकॉज द ब्लेंड इज गोइंग टू बी परफेक्ट और ये हल्का सा लगेगा आपके चेहरे पे एंड वोंट स्टैंड आउट लाइक अ डार्क ब्राउन कलर. उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द कॉम्पैक्ट टू सेट द मेकअप. नाउ द मेन फोकस इज द आईज. तो इसके लिए फर्स्ट आई विल आउटलाइन द आईज विद काजल. अगर आपकी आंखें वाटरी हो रही है देन जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रीअप्लाई. इसको टाइट लाइनिंग बोलते हैं. हम अपर आईलिड्स के पास भी ऐसे काजल से आउटलाइन कर लेंगे. नेक्स्ट आई वांट टू मेक श्योर कि ये वाला जो काजल है ये स्मंज ना हो. For that, I'm going to use brown eyeshadow with angular brush. So with the angular brush, I'm taking a little bit of product और उसको मैं eyelashes के नीचे लगा लूँगी. Now instead of black eyeliner, I want to use a navy blue eyeliner. It's the same thing, it's just like I want to give a twist to the Bengali look. If you want to extend the wings further of your eyeliner, you can use an eyeliner pen to do that. That's going to be easier. For this, a black color is fine.
Just make sure that it's balanced on both sides. Now, using the mascara, brush out the lashes. If you have thick eyebrows, that's good enough. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके eyebrows जो है थोड़े से scanty है बालों के हिसाब से, you can define them further. All you need is the brown eyeshadow palette and angular brush to do that. बिंदी तो मैं बिंदी नहीं खरीदना चाहूंगी, बल्कि I will use my lip color to do the बिंदी. And to finish the look, I'm going to use the same lip color on my lips. So that is my Bengali traditional look for Poila Boishakh, which is the new year for Bengalis. And I hope you like this look to get some inspiration to look like a bong or to get makeup ideas when you are wearing ethnic wear. क्योंकि ये वाला जो लुक है ये आप किसी भी साड़ी या कुर्ता के साथ भी पहन सकते हैं. So if you like this video, do give me a thumbs up. मुझे ज़रूर बताना आपको कौन से compliments मिले comments में लिख के. Also, do not forget to subscribe to the Wow Detector क्योंकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा videos लेके आऊँगी. So click on the bell icon and stay tuned for more. Until then, this is Mesayanti signing off. Have fun and stay well.